Okay, dear students, the topic for today's class is about file organization, and we will be discussing a few types in which the file can be organized. That means the records can be stored, and then we will be discussing about the file access mechanism, how you can access the file using different methods, right? So in file organization, you should be aware about few terms. Like what is a file we have already discussed, which is a collection of similar records, right? And it may be referenced by name. And जो access controls होते हैं, right, it can be just a read file, or it can be a read write file, or it can be a read write execute file for some, right? वो भी restrictions इस पे apply होते हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं यूजुअली फाइल लेवल पर ही. व्हेन द फाइल इज़ बीइंग क्रिएटेड देन यू कैन डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स applied on the file. Then we have common term like field, record, and database. What do you mean by field? So when you have a file, suppose you are maintaining a student file, right? So there is one column like student roll number, one column like student name, another column like the mobile number of the student, another column is holding the information like the father's name, right? So these are the different fields. So basic element of data, it contains a single value and there is a fixed or variable length possible, right? So as there is a mobile number, then there will be definitely a fixed length that it has to be of 10 digits. If it is a roll number, then also it depends from university to university, but there will be fixed length on that, right? So that is the field. And then there is a record. Record refers to if suppose there is a student A with the following informations कि उसका name A है, उसका roll number ये है, उसका father name, उसका mobile number और उसका details, जितनी भी उसकी details हैं उसको हम बोलेंगे record. So that means fields refers to the vertical columns and record refers to the horizontal lines. ओके सो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन फील्ड्स में स्टोर्ड उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं. इट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिट बाय सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. इट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ जो कि डिपेंड करता है फाइल के ऑर्गेनाइजेशन पे. देन देयर इज अ डेटाबेस. सो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, relationship among elements of the data are explicit. So if you are saying that we are having a student database, that means you will be holding all the information related to students, right? So that is a database designed for use by a number of different applications, consists of one or more type of files. So it may be possible that you are having the students list in the form of Excel sheet, and then you are having the information regarding a student performance, right? So these can be stored in different files, okay, and that forms a student database part. देन फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन का रॉ फॉर्म में हम मतलब बोलें तो किस तरीके से हम उसके अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड्स को स्टोर करवाएंगे, दैट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. इट रेफर्स टू द वे द डेटा इज स्टोर्ड इन द फाइल विच विल अल्टीमेटली लीड टू डिटरमाइनिंग किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या एफिशिएंसी है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी प्रोवाइड करा रहा है, एंड स्टोरेज डिवाइसेस टू यूज़, कौन से स्टोरेज डिवाइसेस उस तरह के फाइल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हैं. फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. दैट मीन्स किस तरीके से रिकॉर्ड्स को प्लेस करना है एज डिटरमाइंड बाय द वे इन विच दे आर एक्सेस्ड. इन चूजिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कुछ क्राइटेरिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है. दे शुड बी शॉर्ट एक्सेस टाइम, ease of update. That means if you want to insert any record or you want to delete any record या modify करना है, then it should be easily updated. Economy of storage, that means the space which is being taken by that file, it should be utilized properly. Simple maintenance of the file and reliability. Reliability in terms, if the data is lost, then you are able to recover the data. जो प्रायोरिटी होगी इन क्राइटेरियाज पे वो डिपेंड करती है कौन सी एप्लीकेशन के लिए आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, राइट? सो डिपेंड करता है क्या एप्लीकेशन है उस पे कि किस तरीके का फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि आपका प्रेफरेंस शॉर्ट एक्सेस टाइम पे रहेगा या फिर रिलायबिलिटी पे है,
because all the features cannot be present in one type of organization. So it depends what is your preference, right? So we'll be starting with the file organization types now. The first type of file organization we have is the pile or the heap organization. Alright, so we are here with the pile or the heap file organization, the first one, and it is the least complicated because as you can see the diagram, there is no proper structure. This is the data stored in different records, and no record has the same length or any fixed format. So variable length records are possible. Variable set of fields, that means one student is having name and roll number only, other student is having name, roll number, mobile number. That means there is a variable length of records. किसी में ज़्यादा डेटा स्टोर्ड है, किसी में कम स्टोर्ड है. नंबर ऑफ़ फील्ड्स जो है वो भी सेट नहीं है, किसी में 2-3 फील्ड स्पेसिफाइड है, किसी में एक ही स्पेसिफाइड है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट मीन्स द ऑर्डर दे आर कमिंग इन, वही मेंटेन किया गया है. सो व्हाट कैन बी सेड अबाउट दिस पाइल टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज it is the least complicated form of file organization because as the records are coming, they are being placed. It's like heap, that whatever data is coming, we are just storing it. We are not maintaining any structure or anything like that. जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है, जिस भी ऑर्डर में वो आ रहा है उसको उसी ऑर्डर में स्टोर करते जा रहे हैं. सो आवर जस्ट पर्पज इज़ टू एक्यूमुलेट द मास ऑफ डेटा एंड जस्ट सेव इट, राइट. किसी भी रिकॉर्ड में सिर्फ क्या होगा, आपका पूरा बर्स्ट ऑफ डेटा है. There is no requirement that records contain the same information or be of the same length. जो यहाँ पे दिख रहा होगा, this is one record, this is another record. इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, इसकी कम है, फिर कम. That means the same length issue is not here. Each field must be self-describing, including a field name as well as the value. The length of each field must be implicitly indicated by delimiters, explicitly included as subfield or known as default for that type of field. जब यहाँ पर कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी ढंग से डिफाइन नहीं है, तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर्ड है वो स्टोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन को खुद से ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा. अच्छा, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू दिस, रोल नंबर इज दिस, मोबाइल नंबर इज दिस. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी सेल्फ डिस्क्राइबिंग, राइट. एंड जो वैल्यू है वो लिखी होगी. लेंथ जो होगी हर एक फील्ड की वो हम डिलिमिटर्स से शो करना पड़ेगा, राइट. एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड एज अ सब फील्ड, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड की एंट्री कहाँ पर ख़त्म हो रही है. सो दिस इज़ द पाइल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या हीप ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं. ये इस डायग्राम में शोन है. सो वेरिएबल लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर, वेरिएबल सेट ऑफ फील्ड्स, किसी में 2-3 फील्ड्स हैं, किसी में 5 फील्ड हैं, किसी में एक ही फील्ड है. देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिस ऑर्डर में डेटा आया है उसी ऑर्डर में उसको स्टोर कर लिया गया है. देयर इज़ नो स्ट्रक्चर, इसको हीप ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं. एडवांटेज क्या है? गुड स्टोरेज एफिशिएंसी. इसमें स्टोरेज का काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है. जैसे ही डेटा आ रहा है उसको हम स्टोर करते जा रहे हैं. अपडेट करना इसको ईजी है, राइट, क्योंकि जिस भी फॉर्म में डेटा आया वैसे ही रख दिया गया. इफ़ यू हैव टू रिमूव द डेटा, यू विल फाइंड आउट द डेटा एंड रिमूव इट. न्यू एंट्री आ रही है, जस्ट पुट द डेटा ऑन द हीप. देन डिसएडवांटेजेस, नॉट सूटेड फॉर ईजी डेटा रिट्रीवल. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ईजी डेटा रिट्रीवल, दैट आई वांट टू retrieve a record, then it cannot be retrieved easily because you will have to perform the exhaustive search. अगर मुझे सबसे पहला वाला रिकॉर्ड एक्सेस करना है, if this is the first one and हम यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, then I will have to keep on searching. So exhaustive search is required to retrieval of any data, right? So that is the case with the pile or heap file organization. Next we will be seeing the sequential file organization. So this is the diagram for sequential file organization. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, सबसे कॉमनली यूज़ होता है. एक्चुअली देयर इज़ अ फिक्स्ड फॉर्मेट, right? The fixed format is used for records and records are of same length. So if you see this diagram, then it is showing the length of the records is fixed, right? And there is a fixed set of fields. There are 4 fields जिनके लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है. एंड द लेंथ ऑफ द रिकॉर्ड्स is also fixed. So this shows the fixed length record, fixed set of fields in the fixed order. That means अगर A की एंट्री यहाँ हुई है तो वो यहीं रहेगी, B की एंट्री यहाँ हो रही है तो यहीं रहेगी. Sequential order based on the key field. So sequential order में अरेंज करते जाना है. जब भी डेटा आ रहा है या रिकॉर्ड आ रहा है उसको हम ऐसे ही स्टोर कराते जाएंगे sequentially. All the fields are same, चाहे ऑर्डर या लेंथ की बात करें.
field name and length are the attributes of the field. So we all know it, these are the fields. इनका जो नेम होता है और जो लेंथ शो करता है, दैट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल. वन पर्टिकुलर फील्ड इज रेफरेंस टू एज की फील्ड. सो इफ़ यू हैव अ स्टूडेंट डेटाबेस या स्टूडेंट फाइल होती, तो वहाँ पर रोल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ की फील्ड, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को, राइट. सो अगर आपके पास स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है and its percentage in semester, then uniquely हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज दे मे बी चांसेस कि स्टूडेंट का नाम सेम हो, लेकिन यूनिक की कौन सी होगी, आपका रोल नंबर, क्योंकि दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है. रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द की सीक्वेंस. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी हो सकता है या न्यूमेरिकल ऑर्डर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द की फील्ड. सो इफ़ यू आर हैविंग रोल नंबर एज द की, देन रोल नंबर्स के थ्रू अरेंज हो जाएगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रोल नंबर, देन इट विल गो टूवर्ड्स द एंड रोल नंबर. टिपिकली इट इज़ यूज्ड इन बैच एप्लीकेशन, जहाँ पर हमें एक साथ बहुत सारा डेटा रिट्रीव करना होता है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिक्वेंशली ऑर्डर्ड है ये. सो सिक्वेंशली ऑर्डर्ड में एक एक इंडेक्स, अगर एक एक हमें रिकॉर्ड ढूंढना है, देन यू विल हैव टू परफॉर्म अ सर्च ऑन इट, राइट, क्योंकि सिक्वेंशली ही एक्सेस होगा. सो सपोज आई हैव टू फाइंड आउट दिस रिकॉर्ड, यहाँ पर जिस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, देन आई विल बी सर्चिंग दिस वन, देन दिस वन, देन दिस रिकॉर्ड, देन दिस रिकॉर्ड, देन दिस रिकॉर्ड, देन आई विल कम टू द लास्ट रिकॉर्ड. सो अगर हमें एक साथ निकालना है कि फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स having above 70% in this semester, then it will give exact data, right. But if I have to find out one record, then I will have to travel all the earlier records. So अगर आपको बैच में डेटा लेना है, सिक्वेंशियल लेना है, देन आप आसानी से इससे रिट्रीव कर सकते हो. Only organization that is easily stored on tape as well as disk. Advantage is it is very efficient when many or all records in a file need to be accessed. So that was the same thing I was saying. If you have many records that will have to be accessed, then it can be used. And the cost of tape and drives is also very low, क्योंकि ये यूज़ करता है टेप ड्राइव्स में या जो आपका हार्ड डिस्क है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं. Disadvantages: major drawback is very slow access time for a particular record, as records are accessed sequentially. Must rewrite all the records following the record insertion. So record insert करना भी आसान नहीं है. Every record will be inserted in the end, and then you will have to see, if suppose I have entries for different roll numbers, and then I want to enter any literal entry or any other roll number, so I will have to check all the locations so that the प्राइमरी की के बेसिस पे जो उनकी सिक्वेंशियल बेस्ड पे ऑर्डरिंग है, इट शुड बी मेंटेन. सो इंसर्शन इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी इन दिस केस, राइट. So these were the advantages and disadvantages of sequential file organization. Next in the row we have indexed sequential file organization. So the next one we have is index sequential file. So as the name suggests, it is a combination for index sequence and as well as the sequential organization. So they are indexed records of a sequential file. So sequential file, that means in sequence, and index, that means अगर हमारे पास 10 records हैं, the students belonging to section 1 and section 2, they form one index. So 1 से हम 1 के students को connect कर सकते हैं, then 2 refers to the students in the section number 2. राइट, ये हमारा इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फॉर्म हो गया. द डेटा कैन बी रेफरेंस सीक्वेंशियली और इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड इन यूजिंग द इंडेक्स इफ वी वांट टू डू रैंडम एक्सेसिंग, राइट. So it adds an index to the file to support random access, as indexes contain pointers to the main file. So there is one main file जिसमें कि सारा data store हो रहा है, and there is another file which is the index file जो कि index के through point कर रहा है main file में उस particular record की location को. In index sequential file, records are organized in sequence based on key fields, right. ओवरफ्लो फाइल भी यहाँ पर एडिड है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. जो ओवरफ्लो फाइल है वो रिकॉर्ड करता है जो भी हमारा पॉइंटर्स हैं, राइट, फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर्स रिकॉर्ड इन द मेन फाइल. जो भी रिकॉर्ड ओवरफ्लो फाइल में आ रहा है उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, बाय अ पॉइंटर फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर रिकॉर्ड इन द मेन फाइल. यानी अगर हमारी मेन फाइल फुल हो चुकी है एंड देयर इज़ नो स्पेस एंड द डेटा विल बी स्टोर्ड इन ओवरफ्लो फाइल, then in case you have to refer to a data जो कि overflow file में stored है, it will have to be stored into the main file, then it can be accessed. What is the structure of an index file? It has two fields. One stores the key value
and contains a pointer to the record in the original file. So index file में हमारे पास सिर्फ indexes होंगे. If suppose there is index 1 जो कि section 1 के students को refer कर रहा है, index 2 section 2 के लिए, then index 1 level से हमारे सारे वो students connected होंगे जो कि section 1 में है, और index 2 point कर रहा होगा उन students को, उनके records को जो कि section 2 से आते हैं. Advantages क्या है? The random as well as sequential access is possible. So if you want to perform a sequential access, that can be done, and if you want to perform a random access, that can also be done using the indexes. So if I say all the students with the index 1, that means all the students belonging to section 1. If I say just all the students, then it will give the sequential access and get the result of all the students from both the sections. It accesses the records very fast if the index table is properly organized. So indexing use कर रहे हैं, then if I say just 1, then ये सिर्फ उन्हीं students के records पे जाएगा quickly जिनका indexing 1 से हो रखी है. So the accessing is very fast. The records can be inserted in the middle of the file. So ये भी possible है कि if you want to insert the records, then middle of the file में भी insert किया जा सकता है, because you will just have to change the index value. Then the disadvantage is that it requires more storage space for storing the indexes. जो ये index file है वहाँ पर भी हर एक record की entry के लिए you will have to store the index value. So index table के लिए भी आपकी storage space use हो रही है. It is expensive. The reason being it requires a special softwares, and index sequential access file takes longer time to search, because index एक बार data access में index में होगा and then you will have to retrieve it from the main file. So यहाँ पर थोड़ा time ज़्यादा लग जाता है. Next we will have indexed file organization. So we are here with the indexed file organization. Indexed file organization, as we have seen in the last, indexed और sequential का combination था. So वहाँ पर हम sequentially भी access कर सकते हैं, and if you are provided with the index, then indexed file execution was also possible. But in case of indexed file organization, then जो records access हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ indexes से through हो सकते हैं. That means sequential accessing is not possible. The length of records can be variable. There is one exhaustive index file जो कि per record पे entry contain करता है, and there is a partial index जो कि entries contain करता है उन records की जहाँ पर भी we are interested, या किसी भी user का field of interest exist करता है, सिर्फ उसी records की entry calculate करता है या contain करता है. It is used mostly in the applications where timeliness of information is critical, like airline reservation system, airline control, inventory control systems. So ये हमारे कुछ areas हैं जहाँ पर index file organization का use होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें timely information चाहिए. So we cannot waste time in sequentially accessing the file. We just want quickly that I write the index or name, whatever is the unique key, वो write करते ही the data of the customer should be out. So we have indexed file organization for the same. The advantage is that it speeds up the retrieval, because unnecessary access करना ही नहीं है. The index is there with you. उसी index को use करके you can find out the record of that particular needed request. Then index file is sorted already. Fewer IOs because the index file is smaller. We are maintaining 2 index files, exhaustive index files and partial index file. So exhaustive index में हर एक record के लिए एक entry है, and partial index में entry है to records वो fields जो कि interest वाले हैं उनके लिए. Disadvantages क्या हैं? It slows down the updates because you will have to update the index files, so slowing in the part of updation. And both indexes and indexed files should be updated. So as soon as there is an update, then you will have to update the file जिसमें कि सारा records store हो रहे हैं variable length के, right? And you will have to update the index file as well. Okay, so this is the disadvantage. Lastly, we have the direct or the hashed file. This is another type of organization. This file management system that accesses directly any block of a known address. A key field is required for each record. That means if you want to access any record randomly, you directly give that address
और उस एड्रेस से हम रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग. इट इज़ यूज्ड वेयर रैपिड एक्सेस इज रिक्वायर्ड, वेयर फिक्स लेंथ records are used, and where records are accessed one at a time. So you just give the address and उस particular address से linked record जो है वो that will be accessed. Example है directories में pricing tables, schedules, name list. यहाँ पर हम direct या hashed file organization का use करते हैं. Advantages are records can be quickly accessed by going directly to the address, and disadvantages that it must be done using random access storage, disco या optical disco, which have high cost and sequential, can only use one key. So this is the disadvantage of your direct या hashed file. So these were the file organizations we have seen. Next we will be discussing about the file access methods in my next video. Thank you.